Yes, beautiful morning, goody morning, blessed morning, magical morning. Good morning, good morning. All right, let's open the camera. Magical morning, Rupali. Good morning. All right, everyone. We are beginning our day 17 today of Book Magic. And the chapter today is the Magic Cheque. People who are really looking for big amounts to manifest. This check is a very powerful technique. Many have already used it and created big results, magical results. So today is your day. Who are ready to create money with this check? Write me in the chat box and let me see how many people will really fill the check and will actually manifest. Wonderful, wonderful. First of all, everybody say, I love money, money loves me. Goddess Lakshmi, thank you for always being in my life. I'm a powerful magnet to money. Anything I touch turns into gold. All that, I'm becoming more and more deserving. I'm attracting bigger and bigger money. Universe, thank you for making me such powerful magnet to money. Whenever I touch money, I say go with love, grow with love, or if I'm giving it to somebody. But if I'm receiving the money, I'll say come with love and stay with love. I don't know how, say after me. I don't know how, but there is always geometrical progression in my money. Wherever I use it, wherever I invest it, it multiplies geometrically. Thank you, universe, for all the luxuries I've been given in this lifetime. And me, not only me, but my generations are reaping the rewards. Today, try to identify what are your blockages for money. Are you with me? For example, when you look at money, how do you feel? Scared, grateful? And today, bring in to your awareness all the negative emotions you attach to money and then you are struggling. Is there anyone who receives money and then again becomes having no money? Anybody? They are not good money manager. I was not. जिधर देखूं इतना खर्चा नजर आता है, कहीं भी पैसा डाल देते हैं हम लोग. When we are not good money manager, we will stay in this condition forever. Saving money and being stingy to money. Which is positive? 1 or 2? Saving money or being stingy? Stingy बोले तो पैसे देना तो किड़किड़ करना है, डरना है पैसा खत्म हो जाएगा, अरे मेरा पैसा खत्म हो रहा है. Make sure I identify the blockages. Okay, let me check. You write your blockages in this chat box. How do you feel about money? Don't be scared, be vulnerable. How do you feel? No money.
No, Sonam, if you are struggling in money, identify. Yes, Deepak. Yes. So, what is the opposite of money doesn't stick around? Money loves to stay with me. Money loves me. And she finds the best place to live in my heart, in my locker, in my bank account. The more I love money, the more money stays with me. And identify what mistakes you make. Chandni says fearful or constant flow through my work. Kangana, good. That means you have good money. Yes. That's why you're not attracting people who are feeling fearful and sometimes worried. What for worry? अरे अब तो पैसा है ही नहीं है तो अब वरी काहे की है? अब तो शुरू करो जिंदगी. वरी तो तब होती है पैसा होके चला जाए, जा रहा हो और आपके पास कोई हल नहीं हो. People don't pay me because you not treated money like your child. किसी ने मांगा दे दिया. आप अपना बच्चा किसी को दोगे? Anybody? किसी को भी जरूरत पड़ी पैसा चाहिए, जितना चाहिए, अच्छा इतने तो नहीं है, इतना ले लो, दे दिया. तो उसके बाद वो बंदा कहता है जी कौन तुम, कौन मैं, कौन, कौन सा पैसा? नहीं अभी दे ही नहीं पाऊंगा, है ही नहीं देने को. That means you've given your child to somebody. How will you feel when you've given your child to anyone? Good, Janvi. If that suits to you and you're able to continue, very good. That's very spiritual way. So जब आपने ही अपने पैसे को ठीक से treat नहीं किया, how will it stick to you? How will it magnify? How will it become magnificent? So today is the day to identify, write your rules. Good or bad, right or wrong. Today in the evening, we'll do a special healing for money. Today is Friday. We'll do a special healing for money. Okay? All right. With that, let's get serious about money from today onward. Dimpy not even working, like making money, still attracting money every day. Am I right, Dimpy? So she's become master at attracting money. That's why she has highest number of miracles. And you read her miracles, they'll be more about money side. Gifts ho gaye. So always keep your money and worship it like you worship your children. And it's very unfortunate when we are stuck in networking market. Everybody cannot succeed there. Is that right? हम सब ने, very good, Dimpy. It's my daily affirmation to save money. So people who are stuck in network marketing after 25 years, 20 years, I realized that I'm not good at networking and I left it. From that day, my life turned around. And so all the time, we have only one thing in mind, how to make this person join my network. उसके आगे कुछ समझ ही नहीं आता. And when people join and then they don't work,
because it's a very cancel. It's a very tough way of making money. बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं. And I was a big failure in network marketing. So don't take my experience. If you're succeeding, carry on. But I have not seen anyone yet who could continue for the rest of life. उसमें वादे बहुत बड़े हैं. Yeah, we are not meant to do that. People who are succeeding, more power to them to succeed more. But probably it's not meant for me. All right, with that, I think there's no sharing right now. Let's start reading the chapter. Yeah, even I can't succeed in share market. I succeeded in long-term investments, but not in share market. Yes, Sonali. Good morning, ma'am. Very good morning. Ma'am, frankly speaking, मैं last 15-20 days I'm not practicing journal, but still miracles has not stopped. Wow. Uh, because of my home shifting and everything, I was really occupied in that, but still I am every day try to join the class online and doing the practice of the same. Ma'am, as you know, yet I'm not got any job. I have tried, I have given the interviews and everything. I'm just now taking the follow up of the same, but is more important because money is not stopped. Money is getting means I'm not in short of money. It is getting from somewhere, but I'm not lacking for the money. And for the job I have surrendered and I am doing the practicing of my dietitian and all, but still money is not there in the shortage. Second Wow. thing, ma'am, as my means previously also I have shared that yes, my son also do the affirmations every day. He writes the affirmations every day, but somewhere gratitude only for his teachers he is not paying very well. So before 2 days, we have a healing chapter of relationships. That day he was getting late for the tuition, and Mansi ji has shared the screenshot on the laptop, which was written like, "Thank you for the best day ever come, the gift of health, and thank you for each plan going well." So I was returning that on the paper. That paper is yet there in front of me, and he was getting ready for the tuition, and that day he was getting late. So he was saying that, no, mama, now that teacher is going to scold me, I'm getting late, this and that. So I said, no, it's okay, you can say this at least. So he was like, no, I won't. But he has read that this paper which I was writing, and I don't know. After coming home in the afternoon, I have not asked anything. In the evening, I have asked him, "What happened? Means, is he scold you?" So he said, no, mama. That second line, like, thank you for each plan going well. He has practiced that and he went to the tuition. And now he come to know the importance of gratitude towards everything. So that is a big miracle. Means I'm happy for the one thing that he was not paying much gratitude for his teachers, but now he understand the power of the affirmation, the power of the gratitude, and now he has again started, means now he has started making gratitudes towards everything. So Wow. that is a big miracle. But point is that, ma'am,
from last 15 to 20 days, because of my shifting and all home relocation and everything, I'm not able to write practically in the journal, but in the mind I was doing the practice. And yesterday my throat was fully blocked. I'm not able to speak, but the I'm magically healing, and my throat is healed magically. That practice makes me able to speak today. So Wow. that is a miracle happening. And thank you to you as well as Mansi for guiding. And that laptop screenshot yet I have written on this paper. So this makes us really useful, that whatever we are sharing in the group, and if we do the practice of the same, we can create the magic, ma'am. So thank you so much. Wow. Now everything is coming streamlined. Let's see how it works. But yes, magic is happening, though I'm not sharing because of some issues, but still it is happening. So thank you so much. And thank you, Mansi, also. Please make us inspiration more and more by sharing, so we also learn from that. Thank you. This is the benefit of sharing in the group. This is the Yes. benefit of sharing in the community. This is the benefit of expressing what you did, what made you succeed. That's how we are at the end of contribution. Ma'am, and that from the day one, I was same thing insisting that kids are getting benefited. Even just listening that things, kids are becoming benefited. So that is true, ma'am, and that is working. Awesome. So our generation is also started making gratitudes, like Adya, then Deepak's daughters, both the daughters, Janvi's and Vivan, all are just becoming little magicians. Wonderful. More power to everyone. Looking forward for Yes, more yes, ma'am. results and more miracles. Thank you for Yes, sharing yes, ma'am. and Thank you. caring. That's Yes, something ma'am. Thank you we so feel that we much. are grateful to them. God bless you and I love you. Thank you, ma'am. Rupali, what's your take? गुड मॉर्निंग मैम। Very good morning. मैम बहुत अच्छा जा रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग सो ग्रेट। एंड मतलब हर जगह पे अप्रिसिएशन मिल रहे हैं मुझे। मेरे जो एचओडी से मुझे नई वो मिल रही है, मतलब नई ड्यूटीज मिल रही है। पहले मैं सिर्फ कंसल्टेंट में थी, अब मुझे और अपॉर्चुनिटीज सामने आ रही हैं। एंड मैम मैंने ये सोचा था कि मैं अपने फादर को बताऊंगी मैजिक बुक के बारे में, मतलब जब मैं घर जाऊंगी तो आई विल टेल हिम। बट मैम मैं ऐसे बोलती थी कि यूनिवर्स को थैंक यू बोलना चाहिए, पापा को भी बोल रही थी, मम्मी को भी बोल रही थी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने देखा उन्होंने लिंक सेंड कर दिया मुझे द सीक्रेट का। और मैम उसमें सारा एक्सप्लेनेशन था। तो फिर मैंने पापा से बोला कि आपको गलती से आया था कि लिंक आपके स्क्रीन पे आया था क्या, या फिर एआई ने, मतलब आजकल चल रहा है ना कि हम लोग देखते हैं तो आ जाता है। तो कह रहे नहीं, मैंने 25 ईयर्स पहले ही ये बुक पढ़ ली थी। बुक पढ़ी थी द सीक्रेट के नाम से। और वो भी थोड़ा ग्रेटिट्यूड, मतलब वो है पॉजिटिव इस बारे में। तो मुझे समझा रहे थे। तो फिर पापा कह रहे अच्छा इसी वजह से तुम इतनी खुश रहती हो। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच मैम। मतलब लिटरली मेरे को नहीं पता था कि यूनिवर्स उनको मैसेजेस भेज रही है मेरे रिगार्डिंग, कि उनको पता था पहले से। बट मैं वो सीरियसली नहीं शॉक। भेज रही थी, वो भेज चुकी थी 25 years पहले। वो उसकी वजह से थोड़े बहुत ग्रेटफुल थे। बट जब आपने इच्छा जाहिर की यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स ने वो फिर से उनको रिमाइंड किया। ओके मैम। मैम ये यस। बहुत बहुत अच्छा था। और एक्सेलेंट। मैम, मैम पूनम मैम से जब मैं यहाँ मतलब मिली थी, जब वो मेरी पेशेंट बन के आई थी, तो उन्होंने जिस तरीके से मुझे गाइड किया था वो तो बहुत ही अमेजिंग था। क्योंकि उसके बाद से जो चीजें बदली है ना, लाइक 360 डिग्री पे मेरी पूरी दुनिया पलट चुकी है। ऐसे मिराकल्स होते हैं मतलब हर रोज। आई मतलब इवन फ्रॉम फर्स्ट डे, 1 अक्टूबर से लेकर अब तक मेरे पास 46 मिराकल्स हो चुके हैं। और वन। मैं उस चीज से बहुत खुश हूँ। हर छोटी छोटी चीजों में भी मुझे मिल जाता है। इवन यहाँ की अभी जस्ट मैं अभी रास्ते से आ रही थी, फिर एक मिराकल हो गया मेरे साथ। मैं मेज कर रही थी कि वो घोड़ा मेरे पास आए योगा डोम के अंदर जहाँ हम योगा क्लास करते हैं, मैम वो घोड़ा अंदर के अंदर आ गया। तो मैं जो सोच रही थी वो हो रहा था, तो मैं बहुत खुश हो रही थी कि बहुत सारी चीजें अच्छी जा रही हैं।
और मैम पूनम मैम ने मुझे ग्राफोथेरेपी भी कराई थी ना, तो मैम उससे और पॉजिटिव रिजल्ट्स आया कि मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ ऊपर पहुंच चुका है। तो थैंक यू सो मच मैम आपके लिए। पूनम मैम मेरी मेंटर है, उनके लिए उन्होंने मुझे आपसे जोड़ा और इतने लिंक अच्छे हो चुके हैं कि अब मेरी पूरी फैमिली आपसे जुड़ने वाली है। बस Thank मैं you घर so जाऊंगी much. दिवाली पे तो कुछ सब कुछ मैं ज्वाइन करवा दूंगी उनको। Thank you, thank you, thank you. God bless you. How good we feel, right? यस मैम। See you, Nisha, in the class. Yes, please. Janvi. मैम वो अभी ये सोनाली जी ने और उन्होंने बोला ना कि बच्चे बेनिफिट ले रहे हैं। आप सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहे हैं, नव पीढ़ी का भी निर्माण कर रहे हैं जो अभी से सब कुछ इजीली लर्न करिए। वो विश कार्ड बनाया था बच्चों ने कि विश विश वाला डे जो मॉर्निंग मैजिक में हमने पढ़ा, उस दिन आपने बोला कि सब मतलब ऑडियो सब ओपन रखो तो बच्चे सुनेंगे, घर में वाइब्रेशन जाएंगे। सच में मेरे मेरे घर के वाइब्रेशन से चेंज हो रहे हैं, पूरा चेंज हो रहे हैं। मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअली वो सब एक दूसरे पे ये मतलब मारना ये वो सब करना, बच्चे हैं तो करते रहते हैं, पर हस्बैंड वाइफ के बीच में भी काफी अच्छा रिलेशन बनने लगा। और ये वो विश कार्ड बनाया सबको दिया। फिर नेक्स्ट डे सामने वाले घर में वो एलईडी आया बड़ा, काफी टाइम से वो वेट कर रहे थे। तो जाके उन्होंने बोला कि हमने कल आपको कार्ड दिया था तो आपने उसका यूज किया ना, तो देखो आपकी विश कंप्लीट हो गई। और मेरे घर पे भी कुछ मेरा रीइंस्टॉलेशन का काम बाकी रहता था टीवी के रिलेटेड, तो वो भी हो गया। वो बोले कि मम्मा आप बहुत दिनों से महीनों से बोल रहे थे ना कि आपको ये करना है, तो आपका भी विश कंप्लीट हो गया। फिर नीचे जाके सबको पूछाया कि आपका विश कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप उसको करिएगा तो महीने भर में विश कंप्लीट हो जाएगी आपकी। और बोला कि आपको अच्छी नींद आई थी कल, आप नींद मांग रहे थे ना विश में, वैसे वहां पे एक एजेड लेडी है, उनका ऑपरेशन हुआ है तो उनको थोड़ा मतलब मेडिकेशन पे चल रहे, तो उनको भी जाके पूछ के आया कि आपकी विश कंप्लीट हुई, आपको सही नींद आई ऐसे। तो मतलब छोटे छोटे बच्चे भी मतलब 6 साल के हैं पर इतना एंजॉय कर रहे हैं ना इन सब चीजों को, तो मजा आ रहा है। और सच में मिरेकल्स हो रहे हैं मैडम, मतलब कि ऑफिस में ये एक माइंड में पूरा रिवायरिंग हो रहा है, कॉन्फिडेंस आ गया बोलने का। सिर्फ अभी जो जहाँ पे जो भी कमी है उस पर काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो भी होने लगेगा यूँ। और मैम ये कल रिवायरिंग सेशन में सब लोग अपना डायरी खोल के कुछ लिख रहे थे, तो वो क्या प्रैक्टिस है? मैं ज्यादा शाम का अटेंड नहीं कर पाती हूँ, घर में थोड़ा किचन का वगैरह, तो ये पता नहीं है कि कल क्या लिख रहे थे सब लोग। कोई बात नहीं है, उस समय कुछ लिखना नहीं होता, किसी का अपना कुछ मन होता है तो वो लिख लेते हैं, अदरवाइज कुछ ऐसा नहीं है जो आप मिस कर रहे हो। ओके। अफर्मेशंस लिख रहे हैं शालू सिंह, जबकि वो टाइम अफर्मेशंस लिखने का नहीं है, वो टाइम सिर्फ ब्रेन रिवायर करने का है। उस समय तो सिर्फ सुनने का काम है, लिखने का काम मॉर्निंग में है। सो राइट इट इन द मॉर्निंग। थैंक यू जानवी फॉर शेयरिंग। People who were in yesterday's session, from yesterday night to now, did you find the change in Janvi? Her complaints are vanished and her vision has gone towards miracle. Her focus has gone towards miracle. So that's how, when we become logical, we are insane. Right? Let's Didar. Let's listen to Didar now. Stop complaining. वेरी गुड मॉर्निंग मैम। Very good morning. बिना बोले मैजिक हो जाता है, ठीक है, और अपने आप ही हो रहा है। तो द मॉर्निंग स्टार्टेड, अर्चना को हॉस्पिटल लेकर जाना था एक टेस्ट के डॉक्टर डिस्कशन के लिए। तो उस पे जाने के लिए आई वाज लाइक थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम। एंड डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी एंड शी सेड नथिंग टू वरी अबाउट, आप 3 महीने का ट्रीटमेंट में सब ठीक हो जाएगा।
आई वाज लाइक ठीक है। तो उसके बाद हमें डीमार्ट जाना था, तो उस रोड पे ट्रैफिक वाज लाइक बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है। मैं अब सोच रहा था अगर पार्किंग, एंड हमें उससे पहले लंच करने जाना था, दैट वाज अक्रॉस द रोड। मेरे को ध्यान नहीं आया, एंड अनकॉन्शियसली मैंने डीमार्ट वाले रोड पे ही कट लगाया है, एंड पूरा रोड भरा हुआ है, सिर्फ मेरे लिए वो गाड़ी निकल रही है, एंड आई गॉट द पार्किंग। उसके बाद डीमार्ट गए हैं हम। डीमार्ट जाने के बाद वो ट्रॉलीज के लिए वहाँ वर्ल्ड वॉर 3 चल रहा होता है। फॉर मी इट वाज नथिंग। मैंने बोला कि यार ट्रॉली ढूंढनी है, चल कोई नहीं, देखते हैं। एंड द नेक्स्ट ट्रॉली आई सॉ, मैंने पूछा, मैं क्या आपका हो गया? कहते हैं हाँ, आप ये ले जाओ। ट्रॉली वाज देयर। उसके बाद मतलब, एंड आई थिंक इट्स बीन 1.5 year, 1.5 साल बाद हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हमने इतनी चिल मार्केट, भीड़ बहुत ज्यादा थी, ठीक है, बट देन हम चिल मार्केट घूम रहे थे। 3 बार हम फर्स्ट फ्लोर गए हैं, अच्छा यार ये भूल गए, चल ये भी देख लेते हैं, ये भूल गए ये भी देख लेते हैं। एवरीथिंग वाज सो स्मूथ, जो जो हमें चाहिए था, वी फाउंड एवरीथिंग। ठीक Yeah. है, वो दिवाली गिफ्टिंग के लिए लेना था, सब कुछ हो गया। एक जबरदस्त मैजिक और, रात को जतिन भाई केम ओवर, तो डिनर हमने ना बाहर से ही ऑर्डर किया, एंड व्हाट हैपेंड, तो डिनर गॉट लेट, द गाय ही केम अराउंड 1 घंटा 10 मिनट में। तो आई लाइक, ऐसे ही मैंने ना जोमेटो को चैट किया। तो जनरली पहले क्या होता था, पहले जमाने में 4-5 साल पहले, तो वो रिफंड करते होते थे। अब वो रिफंड नहीं करते, अब वो सॉरी बोल के थैंक यू बोल देते हैं, मतलब बेसिकली इन शॉर्ट मिडिल फिंगर दिखा देते हैं कि भैया दफा हो जाओ, हो गया लेट तो हो गया, हम क्या करें। तो मैंने सिर्फ मैसेज किया है, वेयर इज माई ऑर्डर। उनका नेक्स्ट मैसेज, we really apologize for the inconvenience, the order got delayed, here is the order amount का टोटल प्रोमो उन्होंने क्रेडिट कर दिया। यही मैसेज किया, वेयर इज माय ऑर्डर, दैट्स इट, एंड इट केम ऑटोमेटिकली कि भैया ये पकड़ो आपके पैसे, सॉरी आपका ऑर्डर डिले हो गया। Wow. मतलब Excellent. ये तो मतलब आउट ऑफ द ब्लू है कि ये तो उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अब नहीं होता है, दे डोंट गिव। Yeah. अच्छा, मेरे को कल आपने जो बोला था ना कि कंप्लेंट नहीं करना एंड सिर्फ एक्सेप्ट कर लेना है, तो मैंने कल ये फील किया कि हाँ, एक्सेप्टेंस इज अ बिग डील। मतलब आप जब Exactly. मान लेते हो जो हो रहा है ना, बढ़िया औरत देखी जाएगी, अभी नहीं Exactly. समझ आ जाएगा। और तो उसमें क्या जाता है, अदरवाइज तो लॉस हो ही रहा है नेगेटिव सोच के, और उस पॉजिटिव सोचने से अगर बेनिफिट हो जाता है, व्हाई नॉट? एक्सीलेंट, मैं थैंक यू कल सो था, मेरे साथ 2 बार हो चुका है। और जयपुर स्टेशन पे देयर वाज दिस कपल, इनके पास, इनके साथ एक बच्चा था, वेल ड्रेस थे। ट्रॉली भी मैंने देखी, मेरे से अच्छी ट्रॉली थी इनके पास, ठीक है। तो मैं एक बार देख रहा था कि ट्रॉली अच्छी लग रही है, कौन सी है, बट देन दिस गाय केम टू मी, ही सेड भैया थोड़े से पैसों की हेल्प हो जाएगी। तो मेरे दिमाग में फिर से वही आया, मैं कहा यार ये वही ना, वो जो काम करने वाले बंदे घूमते हैं कि मतलब ऐसे ही पैसे लेंगे। मैंने उसको मना कर दिया। कल फिर ऐसा ही, एज सुन एज वी केम आउट फ्रॉम आवर लंच, दिस वन गाय केम, ही सेड भैया थोड़ी पैसों की हेल्प कर दो, मेरे ना पैसे चले गए हैं, एंड मेरे को, दे हैव दिस कॉमन पिच, मुझे इटावा जा रहा है यहाँ से, 350-400 रुपये लगेंगे मेरे को। तो मेरा एक मन था कि मैं दे दूं, मतलब मी बीइंग दिदार, मैं उठाकर दे देता, बट देन अर्चना वाज विद मी, शी सेड यार नहीं। तो मेरे को कहीं ना कहीं ना वो थोड़ी सी गिल्ट भी थी यार, क्या देना चाहिए था, सच में ही जेन्युइन था बंदा। तो इट हैपेंस, आई मीन। Yeah, definitely. But listen to your intuition. मेरी इंटेंशन तो कहती दे दे यार, कुछ नहीं फर्क पड़ता। Exactly. दे मतलब आई दिया तो तो थिंक चलो। यार, वो जो प्यो हैगा ना, वो देखो बथेरा पैसा चलता रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। Yes. Excellent. Superb. Thank you for sharing. सो Look मच at that. मैन, आई फील स्टिंजी व्हाइल स्पेंडिंग। Wonderful. Wonderful. Yes. Who's coming next? Someone we need to clear fast. It's 8:07. Or let me have the rest of the chalo, Deepak, quickly. Yeah, ma'am. Quickly, I'll go.
तो मैम वेरी गुड मॉर्निंग एंड मैम थैंक यू सो मच। मैंने आपसे फाइनली कल कॉल किया एंड द एडवाइजेस व्हिच यू गेव वर रियली रियली यूजफुल। तो मैंने आपने जैसे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वाली चीज़ बोली थी ऑन द एक्शंस व्हिच टू टेक, तो मैं कल थोड़ा थोड़ा सोचा उस पे और व्हाट आई थॉट इज वेट करने से मतलब नहीं है, लेट मी टेक सम एक्शन और प्रोबेबली वन इज बेटर देन टू इन द बुश जैसे आपने बोला। So, Yeah. what action I was able to take yesterday was I talked to my parents. मेरे पेरेंट्स के यहाँ पे एक टेनेंट रहते हैं, एक हॉल दे रखा है उन्होंने, पापा और मम्मी ने। तो वो हॉल काफी बड़ा है, उसमें आराम से 20-25 बच्चे आ सकते हैं पढ़ने के लिए। तो मैंने पापा मम्मी को बोला कि दिवाली के बाद आप उन लोगों को बोल दो कि 1 मंथ का हम आपको नोटिस दे रहे हैं एंड आप फिर खाली कर देना एंड आई विल स्टार्ट माय क्लासेस जो ट्रेनिंग मेंटरिंग की है फ्रॉम दिसंबर, मोस्टली नवंबर एंड और दिसंबर। तो अब मैं अगर ऐसी स्पेस, जितनी स्पेस वो है अराउंड वो 250 स्क्वायर फीट की स्पेस है, अगर मैं ऐसे कहीं भी लेने जाऊं तो वो मेरे को इजीली 15-20 हज़ार से कम की तो मिलेगी नहीं, ठीक है। और वो मेरा जो हाउस है वो वैसे भी कॉर्नर हाउस है, तो पार्किंग का भी कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। प्लस अगर मैं कहीं और लेने जाऊं तो मेरे को वो एग्रीमेंट बनाना पड़े, एडवांस देना पड़े, सिक्योरिटी डिपॉजिट, बहुत सारी चीजें, ठीक है। Yeah. तो दैट्स व्हाई आई थॉट दैट दैट इज वन ऑफ द मैजिक व्हिच हैपेंड यस्टरडे, कि आई मेड अप माय माइंड। इवन मैंने लिंक्डइन पे भी उसके लिए पोस्ट डाला कि समथिंग बिग इज कमिंग फॉर द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स करके। एंड कल ऐसा हुआ मैम कि आफ्टर सो लॉन्ग मी एंड माय वाइफ वेंट फॉर अ मूवी डेट। शिनचैन करके मूवी आई हुई है तो Wonderful. वो बहुत फनी मूवी थी। तो मम्मी दोनों बच्चों को मम्मी पापा के यहाँ रख के 2 आवर्स की मूवी थी, हम लोगों ने वहां पे जाके एंजॉय की वो मूवी। सो इट फेल्ट रियली नाइस, मतलब वाइफ को भी थोड़ा सा बच्चों से वो आज़ादी थोड़ी देर मिल गई Wonderful. एंड तो हाँ, अनदर थिंग इज आई वाज, मतलब अब क्या मैंने एक चीज जो सोची है वो ये है कि मैं ट्रेनिंग के साथ साथ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाता रहूंगा विच आर लाइक सेलेबल, मतलब उनको एक क्लिक में बाय करो वगैरह। तो वन ऑफ द थिंग्स विच आई कुड रियली फाइंड द यूज केस वाज, अभी जैसे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हमने काफी कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट्स मंगवाए कॉन्ट्रैक्टर से। तो मैंने एआई का यूज करके उनको समराइज करना सीख लिया है, भले ही वो हिंदी में भी है लेटर्स। तो उससे क्या हो रहा है कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू पुट अप अ पैम्पलेट या फिर एक फॉर्मेट कि एग्री हाउस कंस्ट्रक्शन में ये चीजें होती है। तो एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म टेम्पलेट अभी मिसिंग है, मतलब हर कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से कुछ कुछ चीजें डाल देता है, कुछ चीजें नहीं डालता है। तो मैं एआई के थ्रू एक ऐसा पूरा यूनिफॉर्म फॉर्मेट ला रहा हूँ कि अगर किसी भी बंदे को कंस्ट्रक्शन कराना है तो वो उसको इस लिंक को शेयर करेगा, जैसे गूगल फॉर्म तरह का, उस कॉन्ट्रैक्टर को कि भाई तू फिल कर दे, इसके कितने पैसे उसके कितने पैसे करके। तो मे बी दिस विल वर्कआउट। मैं बोला एक बार फन के लिए तो ट्राई करने में क्या जाता है। तो इट इज हेल्पिंग मी, मे बी इट कुड हेल्प अदर्स। So I will be doing these many things, projects as well. Beautiful. You got so many ideas from yesterday that there Yes, is ma'am. possibility to do this, that, that's how the coaching helps you. Yes, ma'am. True, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Let's take the rest of the sharings after we finish reading. Everyone sit straight, close your eyes, put your right hand on your heart, and with a smile, repeat after me the daily prayer for divine blessings. Beloved Divine Father, Mother, let your divine light fill my mind with wisdom and discernment. Let your divine love fill my heart with sweetness, warmness, and compassion for all. Let your divine power fill me with inner strength to do what is right and to refrain from unwholesome actions and behaviors. Beloved Divine Mother, gaze upon me, your beloved child, with mercy, love, kindness, and abundance. For thou art
all compassionate. Thank you for your protection and thank you for your love. And now is the time for forgiveness prayer. Each one of us has got some karmic account with someone, and we find trouble in that relationship. And it looks like everything is going wrong. Remember the name of that relationship, that person, and call it out loudly. And when you call out, imagine that person is standing in front of you. And you join your hands in Namaste Mudra and bow your head down to that person. And imagine you're looking into the eyes of that person and say, Atma, Namaste. I, the soul, salute the divinity in you. We are all children of Supreme God. We all make mistakes. We are all evolving. I forgive you and seek for your forgiveness at all levels. Go in peace. May you be blessed with good health, happiness, prosperity, and spirituality. Take a deep breath. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Om. Rub this forgiveness energy in your hands. Rub it harder, tighter, and put this powerful forgiveness energy at the place where you have some discomfort in your body, where your body is paining. And this is the place from where all the negativity has to ooze out. Let it go and say, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I forgive myself. And slowly open your eyes. And let's read chapter 17 on page 157. Book is Magic. And the chapter's name is The Magic Cheque. In the magical universe, there are no coincidences and there are no accidents. Nothing happens unless someone wills it to happen. When you direct gratitude's magical power toward any negative condition, a new condition is created, eliminating the old condition. For example, did you see yesterday? Deepak was not getting where to go, where to focus. He had so many opportunities, but today he got the clarity. When you don't really find the right way, are you positive? You're negative. Positive, negative. No, you're negative. When you don't find a way, you are negative. You can't be positive in a negative situation. But the moment you start paying gratitude to even that negative situation, it creates new condition. And the old condition is evaporated, lost. That means that when you get yourself to the place where you feel grateful for money more than you feel a lack of money, a new condition is created, eliminating the lack of money and magically replacing it with more money. I hope everybody is clear what I'm saying. It's damn easy to understand. All bad feelings about money push money away from you and reduce the amount of money in your life. And every time you feel bad about money, you reduce it to little more. If you have feelings about money like envy, disappointment, worry, or fear, you cannot receive more. The rule is so simple.
The law of attraction says that like attracts alike. So, if you feel disappointed that you don't have enough money, you will receive more disappointing circumstances of not having enough money. That is why she's asking you the emotions you're feeling, which are negative. If you're worried about money, you will receive more worrying situations about money. If you feel fearful about the state of your money, then you must receive more situations that will continue to make you feel more fearful about money. However difficult it may be, you have to ignore your current situation and any lack of money you may currently be experiencing. And gratitude is the guaranteed way for you to do that. आपको एक रामबाण मिल जाए और अगर आप उसको यूज नहीं करके स्ट्रगल करते रहे तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता. You cannot be grateful for money and disappointed about money at the same time. You cannot be thinking grateful thoughts about money and have worried thoughts about money at the same time. Nor can you be grateful for money and have fearful thoughts about money at the same time. So when you're grateful for money, not only do you stop the negative thoughts and feelings that push money away from you, you're doing the very thing that brings more money to you. सोचो कहाँ गलती कर रहे हो. अगर आप ही को गलती नहीं मालूम पड़ेगी तो कोई सुधार ही नहीं पाएगा. This is all in you. तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कि क्या नेगेटिव थॉट्स आपके मनी से रिलेटेड हैं. You have already practiced gratitude for the money you have received and continue to receive. So before you use gratitude's magical power for the money you want, you need to understand the various ways and avenues that money or riches could come into your life. Because if you're not grateful each time your riches or money increase, you will stop the abundance from flowing to you. आपको देखना है आप कहाँ गलती कर रहे हो. Money can come to you through receiving an unexpected check, an increase in salary, a lottery win, a tax refund, or an unanticipated gift of money from someone. All these are happening with Dimpy. She has so many ways for money to come to her life. Your money can also increase when somebody else spontaneously picks up the tab for coffee, lunch, or dinner when you're about to purchase an item and you discover it has been discounted. When there's money back offer on a purchase, or when someone gives you a gift of something you needed to buy. Again, Dimpy is receiving all forms of money. The end result of every one of these circumstances is that you have more money. So whenever a situation arises, ask yourself, does this circumstance mean that I have more money? You have to ask yourself to understand where you're making mistake. Because if it does, you need to be very grateful for the money you are receiving through this circumstance. If you tell your friend you're about to buy an item and the friend offers to lend or give you the very item because they don't use it, or if you're planning to travel and you hear about a discounted special that you end up taking, or if your lending institution lowers their interest rates, or a service provider offers you a far better package, your money magically increase through the saving of the money. Are you ever grateful for it? Hello, wake up. अगर हमें कोई चीज सस्ती मिल जाती है तो हम क्या खुश तो हम होते हैं कि पैसे कम देने पड़े, पर क्या हम उसका ग्रैटिट्यूड पे करते हैं? आई थिंक जो प्रैक्टिस करते हैं इसको, दे हैव मोर मनी. बट इफ यू आर नॉट डूइंग इट, यू कैन डू इट नाउ ऑन वर्ड्स. Are you getting the idea of the unlimited situations where you can receive money? अब आपको आइडिया मिले कितनी जगह उसने सिखाया है कि अगर आप इसका ग्रैटिट्यूड पे करेंगे तो आपकी मनी बढ़ेगी. Most likely you have experienced some of these situations in the past. And whether you realized it or not at the time, they occurred because you attracted them. But when gratitude is your way of life, you attract magical situations all the time.
And many people call it good luck, but it's not luck at all. It's the universal law. Any circumstance that results in you having more money or receiving something that costs money is a result of your gratitude. You'll feel great joy in knowing that you did it. And when you combine your joy with your gratitude, you have a real magnetic force that will keep attracting more and more abundance. When I arrived in the United States several years ago, I arrived with 2 suitcases. I worked in a bare bones apartment with my computer on my lap. I didn't have a car, and so I mostly walked everywhere. But I was grateful for everything. I was grateful to be in the United States. I was grateful for the work I was doing. I was grateful for the bare bones apartment with its 4 plates, 4 knives, 4 forks, and 4 spoons. I was grateful for the bare bones apartment with its. I was grateful that I could walk to the most places, and I was grateful that there was a taxi stand right across the street. Then something incredible happened. A person I knew decided to gift to me a driver and a car for a few months. Imagine. Where she was walking and she was grateful and she got a car and a driver on offer. Other than my computer, I was living with the most basic material things to survive, कुछ भी नहीं था उसके पास. And then suddenly I had my own personal driver and a car. Was it possible for her to afford a car? Afford करना फिर भी आप सस्ती ले सकते हो, but affording a driver is next to impossible in the foreign country. I was grateful, so I was given more. And that is exactly how the magic happens with gratitude. So today's magical practice for the money you want to receive has brought astounding results to many people. At the end of this practice, you will find a blank magic check from the gratitude bank of the universe, and you're going to write out the magic check to yourself. Listen to very carefully. Don't ask me any question. Open your ears and listen. It's very simple. आपने एक चेक वो देने वाली है और अमन अभी आपको शेयर भी कर देगा, तो उसकी एक कॉपी निकालनी है. And you're going to write out the magic check to yourself. तुमने अपना नाम लिखना है. Fill in the amount of money you want to receive along with your name and today's date. That's all. Choose a specific amount of money for one thing you really want. This is compulsory to understand कि जो भी आप amount उसमें लिख रहे हो, आप उससे क्या करोगे? Because you will be able to feel more gratitude for the money when you know that what you're going to spend the money on. Money is a means to what you want, but it's not the end result. So if you just thought about money, you wouldn't be able to feel as much gratitude. When you imagine getting the things you really want or doing the things you really want to do, you will feel far more gratitude than if you were just being grateful for money. So have a complete story of receiving your check money. You can photocopy or scan the magic check from the book. You can also get an abundance of blank magic check from www.thesecret.tv/magic-check. If you want, you can start with a smaller amount on your first magic check. And after you receive the smaller amount, you can keep increasing the amounts on your next checks. The benefit of starting with a smaller amount is that when you magically receive it, you will know that you did it. You will know absolutely that the magic of gratitude worked. And the gratitude and joy you will feel will make bigger amounts believable to you. Once you have filled in the details of the magic check, hold the check in your hand and think about the specific thing you want the money for, and get a picture in your mind and visualize yourself actually using the money to get the very thing that you want, and put as much excitement and gratitude into it as you can. So next step is visualize. Hold the magic check in your hand and visualize that whatever you want to buy with that money, you've already bought, and you are being so happy that you've got it.
Maybe you want the money for the new pair of shoes, a computer, or a new bed. So picture yourself actually buying what you want in a store. If you would purchase what you want online, then picture yourself receiving the delivery. So you feel excitement and gratitude. You might want the money to travel overseas or for your child's college education. So imagine buying your airplane ticket or opening a college bank account and feel as happy and grateful as if you really received it. Fake it to make it. There's no other way to do that. After you've completed these steps, take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often. On at least 2 more occasions during the day today, take the magic check in your hands, picture yourself actually using the money for what you wanted, and feel as grateful and excited as you can, as though you are really doing it. If you want, you can do it more times in the day. As with any other magical practice, you cannot do it too often. At the end of the day, either keep your magic check where you had it or put it in another prominent place where you will see it daily. You could put it in your bathroom mirror, your refrigerator, underneath your magic drawer, in your car or wallet, or on the background of your computer. Anytime you see your magic check, feel as though you've received the money and be grateful that now you can have or do what you want. I normally make it a screensaver because maximum we touch things in a day to look at is the first thing is when you open your mobile, when you unlock it. So you can do the same or you do whatever you're comfortable with. When you have received the money on your magic check, or if you receive the item you wanted to spend the money on in another magical way, replace the check with the new amount for something else that you really want and continue with the magic check practice as long as you want. You can do it every day for the next 365 days for the rest of your life. So let's reread it and understand दोबारा से finally आज क्या करना होगा. सबसे पहले मनी की 10 ग्रैटिट्यूड लिखने होंगे जिस उन चीजों के लिए धन्यवाद करना होगा जो चीजें मनी ने आपको बाय करके दी हैं. फॉर एग्जाम्पल, Nisha traveled from Delhi to Kalesa yesterday. She bought the ticket, the cab money, the bus money, or the food money. Wherever she spent, she will write gratitude for that. And then जब आप 10 blessings लिख लोगे, उसको पढ़ोगे, उसके end में दोबारा से उसके लिए 3 बारी बोलोगे thank you, thank you, thank you. Second step, fill in your magic check with the amount of money you want to receive. जितने पैसे आप चाहते हो, जिसको आप believe कर सको. Start with the small. जब आपको टेक्निक आ जाएगी, then you can go bigger and bigger. And उसके ऊपर अपना नाम और आज की डेट डालना है, बस. और कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं बताना. Hold your magic check in your hand and imagine purchasing the specific thing you want the money for. Feel as happy and grateful as you can that you have received it. And take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often. On at least 2 more occasions, take the check in your hands, picture yourself using the money for what you want, and feel as grateful as though you're already doing it. At the end of today, keep your magic check in a prominent place where you will see it daily. Okay? When you have received the money on your check, or if you receive the item you wanted to spend the money on, replace the check with new amount for something else you want and repeat the steps 2 to 4. And at the end of the day, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. With that, we come to an end. If you have the book, the magic check is already given on this page. You can take it out, it's print out, and do the rest of the activity. So day 18 is even more magical. Tomorrow's day is the magical to-do list. बहुत सारे लोगों को जिंदगी में जो जो कुछ करना है और वो कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है. कल की प्रैक्टिस के बाद आपके पास इतना समय आ जाएगा
कि आप लाइफ में बड़े बड़े काम कर सकते हो. So get set go, so that now you will become money rich and time rich too. But today people are money rich and time poor. किसी के पास time है? Hello? बच्चों के पास भी time नहीं है. They are also so busy. Good Nisha, you have time. But आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे कल की लिस्ट, मैजिकल टू डू लिस्ट प्रैक्टिस के साथ, और आप ज्यादा कुछ कर पाओगे. With that, I come to an end. Probably I don't find anybody wants to share anything, so we can end the session. Anybody has any question? Okay. Let's listen to Mansi and Deepak. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Ma'am, thank you so much. Thank you, everyone, to shower so much of love and blessings to me. And see, I am also a person who is practicing that things. So I just wanted to say that the money letter which I wrote, that if at all uh, you do practice that, I don't mind in that, but when you get that feel only, things will happen. So when you are reading that letter, when you are writing that to money, just be sure to have that actual feel in you, and then only you can attract that things. And ma'am, about yesterday's practice, I would say that I got so much of peace yesterday after doing that practice. And it was like मतलब एक अलग सा एक दुनिया, अलग सी दुनिया में रात को जस्ट सोते टाइम, इट वाज अ डिफरेंट वर्ल्ड वेयर आई वेंट, एंड इट्स लुक सो ब्यूटीफुल. आई डोंट नो हाउ आई कैन एक्सप्लेन, बट ऐसा लगता है कि यार कहीं पे नेगेटिविटी नहीं है आसपास, बस लोग थैंक यू ही बोले जा रहे हैं, घूम रहे हैं मेरे आसपास जब थैंक यू बोल रहे हैं. एंड दिस ऑल पीपल इन दिस मैजिक फैमिली, everyone is around and everyone is just sharing their thank yous and sharing their magics and making a world so beautiful place to live. Wonderful. Very rightly, she's saying that you only take the letter as an example, but put your words into that, what you feel. Yeah. Then it'll make more difference, because she has written, you can copy, you can receive the results, but if you want to go really profound, that words and feelings should come out from you. Yeah. That'll make much more difference. She very, very rightly said that. My any affirmations won't help you, as an I don't know the situations of each person, but yeah, this was a situation and circumstantial to my situations. And yeah, it was a very general thing, but still, when you have your perspective and your feel towards what you feel for money, if at all I am saying that I love money, or but if you are stingy to that and still you speak, it will not happen. So have your actual feel in that, and then only things would be changing. Very rightly Thank you said. so much for guiding, ma'am. Thank you so much for being there, for supporting us, for making us aware of the things around, and thank you for showing us a way towards gratitude lives. Thank you, thank I you so love much. you. Love you, Thank ma'am. you so much. Love you. Yes, next. Good morning, ma'am. Very good morning, Sukeshi. So, ma'am, in 2013, my mom had passed away, and there was a will she had left, and me and my brother were the, whatever. Yes. And something, my brother challenged it, and also it went into litigation. My brother used to love me, and I used to love him so much, and I still love him so much. And since 2013 till today, till yesterday, there was not too much connection, and even if there was connection, there was nothing like, I mean, we didn't have anything to say to each other really. And since 4 or 5 days I've been in my prayer, in the morning prayer which you do,
I never had, because I loved him, so I never had any problem with him or any negation. So I never included him in my prayer. So I was like, chalo abhi isko bhi dal do, like let me put him also in my prayer. Just for the sake of putting, huh? Nothing like that. And I got a phone call yesterday from him saying that he wants to settle it. And three times before, we have done the settlement papers and all. But somehow he's always got up from the chair and gone away. He lives in Japan. So every 3 to 4 times, and we've always spent the lawyer money. And this time he called up, and he's saying that let's say that the society is going to go under renovation, and because the 51 percentage this thing has come, majority has come, so it's surely going to get into redevelopment. And if we don't settle it, then this entire thing can go in an escrow account where anybody can eat up that property, and this property is supposed to be in South Bombay, so it is a good valuation property. And he called me up and he is like, let's settle this account. And it is magic, because this was never going to happen. Somewhere, I mean, it's been, ma'am, more than 12 years, 13 years, 2013. And I just included him in my prayer, and I said the sorry, whatever, to him. And this has happened. So it's so beautiful. Ma'am, you're on mute. I can't hear you. Forgiveness is so powerful. Yeah. And so many times I didn't even I'm sure I must be holding something against him. Unknowingly. Yeah, unknowingly. And it has worked, and he has called, and we are going to now go ahead with the paper, and I'm going to work on magical outcomes for this. And one more thing, since last 15 days I have been writing in my journal, in my affirmations, that I'm so grateful for the Bombay property to be solved, and my kids getting their share of money, because now I have a harmonious relationship with my brother. Wow. This used to be my affirmation, and the property is going to be in my kid's name. So this was to my affirmation, and it's coming. And so many of my And affirmations. it should not be in your kid's name. It should be in your name. Yeah, but my mom has in her will written my kid's name as this thing. So it is theirs. They're adults. So one is, the other one is not. But at least if we have done this in our name, the contract or the settlement papers, then it will not go in an escrow account, you know Got it. because once it goes in the court and litigation, then anybody can just mess up with that. So at least now these things are settled. And imagine the timing, like, I mean, me writing my affirmation, I it has to be the magic, because we all have been trying day in day out since so many years, you know and I'm deep inside, my brother loves me and I love him deep inside, and we know that, but sometimes it's just that. And I was just thinking today that when all these mess was happening, I was like, how much I used to curse him, and how I attracted it beautifully in my life. Wonderful. And now how I'm attracting this beautifully in my life. This is Similarly, yeah. with my work, when I was working, I used to be like a parent of two and managing home and all of that, and working as a full-time event planner. And events is like a lot of work, because in that 2 or 3 hours you have to put up that show, and it's like 20 agencies working together, and I'm alone handling those 20 agencies. This is crazy. Yeah. And at that time, I was like, why do I need to also work? And I used to just complain about work, and how beautifully it went away from my life. Wonderful. And I'm seeing it also close, and it is such a beautiful experience, because it how I mean, just it's such a small thing, but it's such a big thing.
I mean, the only ingredient missing in my life was gratitude, which I was not aware of. Mhm. In spite of reading Secret in 2000, I think, uh, 2008 or something. I don't know. In spite of reading it. So, Awesome. I mean, the person. So I thank you for everything and everybody around. And I am so grateful to God for all what is happening, because I think this would be the biggest gift to get back with my brother, and just to talk to him and say hi, how are you, and I hope you're doing fine. That's And it. in this lifetime, if you do that, you're not carrying any negative emotion to the next life. Yeah, so And true. you've so much evolved, and then you've got so much of freedom to fly as high as you can. That is why I say the relationship is one big issue. It doesn't let you prosper. So true. But ma'am, I wanted to ask you, so even if I am doing forgiveness prayer or for somebody, still that thing is, when the person is again coming and again you're getting angry, and maybe you're also bitching sometimes about, or just complaining about that. So what do you do with that behavior? Take the responsibility, change my words, change my thinking, change my feeling, and come to a level where I'm thinking good for both of us. So I can write this in my affirmation, no? Yeah. So Anything that, and everything. sorry? Anything and everything. I know. So I can say that I'm so grateful for feeling, behaving, or thinking neutral for whoever I I'm feel. madly in love with him and he's madly in love with me. Okay, fine. I don't have these feelings that I'm in love with They him. will come with repetition. Okay, fine. Repetition makes the subconscious mind create different chemicals altogether. You won't believe, when our case was in court for my son to get divorced, what affirmation I had. I've repeated it many a times. I'll repeat it again. Thank you, universe, for our love for each other is benefiting both of us in this situation. I Okay, was never selfish to say I am benefited, okay. because I had treated her as my daughter. But if it is a divine plan that she has to leave us in whichever the way or whatever the condition, as a person, I have a responsibility to think good about everyone. Right. And when I'm thinking her benefit, then my benefit is automatic. Didn't you listen to yesterday's give, 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 give? I didn't attend, but I'll do it now. In the night. But what you give comes back to you. So if you're giving gratitude to a person who is not doing well with you and you don't have a good relationship, you are building up relationship for the next lives to come. And Yeah. then you get released, even in this incarnation, you get relieved from that kind of a situation. And then you live the freedom. Yeah, so this is beautifully written in the religious sculptures, like, I mean, Uh-huh. scriptures, like Yeah. our Bhagwan, our Jain good God, is written this only, that. Now, what happens? We read the scriptures to read them, but we don't follow them. We Yeah, don't but live to them. practically do it, it's impossible. But when you say it like this, it Yeah. simplifies. Yeah. Because I could understand it is the story of 2013. Yes. And every time I will look into her eyes, even in the court, even in the police station or wherever she brought us to, and I would look into the eyes. I'll try looking into her eyes and saying, I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. Similarly, when I make you to imagine, and if you have a pain anywhere in the body, that is the place from where that negativity has to release from your body. Okay. And when you touch there and say, I'm sorry, please forgive me, thank you, not only that releases from your chemicals from your body, this also gives a place for more gratitude, so that you have more good relationships with the whole world, not only with one person. So all the pains are negativity? Only I thought there are was. the memories stored in your body, in the cells, in the mitochondria.
So negative emotions stored in the mitochondria. Yeah. So what are negative emotions? That why she has put up a case in me in the court, in the police station, and we have to go there where we never went. And I had lots of grudges with her that everything was right, why she spoiled the whole thing. Then I was complaining her parents that they are the ones who spoiled our house. I had all this. I went through all the trauma. I learned my lessons. And by learning my lessons, I could understand that until unless I will not think good about her, I will not get the good. So better be selfish. So that selfishness, my doctor used to tell me when I was in depression, that be selfish, be selfish, be self, because I was always looking at people and thinking about them, never about myself. Then God made me realize that I have to think about me as well as I have to think about others. I have to have a balance in that. And that's how it was a huge, difficult case with my son to get divorced from her because there was a huge property in her name. We never thought this is going to happen. So get that back was very important for us. If she was living with us, that all was hers. But if she was leaving us, then we can't give her anything beyond. We could give her something. But when she has decided to leave, it was not her decision, it was divine plan. And then now, whenever I think about them, I only have blessings for her. And I remember her every day I do part. She used to do a lot of part. तब हमारे घर में सेवा होती थी गुरु ग्रंथ साहब की, तो she would come and do every morning, every night, very religiously. So I had good memories to remember and feel love for it and pass on love to her, which made me to come out of this difficult situation like magic. So these are some places where I've used magic, the gratitude magic. There are many more. One more thing, ma'am, I have to share. Yesterday, all this was happening, and Mahir, my younger son, he was around. So, and then I was just telling him about what I told you right now, that how beautifully I was cursing because he was complaining something. So I was just saying that, how this, it's so natural for us to just complain. So we need to change this, you help me, I'll help you, is what I was talking to him. So I was like, everything was there, but only this one thing was missing. Like, yeah, Romi ma'am helped, with this. I was like, yes. Because in the morning he's listening to it. So he said that. I was like, yeah, Romi ma'am helped me with Thank you it. so much. Thank you. Love you. Yes, Sahana. Thank you for sharing, Sukeshi. Yes, baby. Ma'am, Yes, baby. I can't hear you. Your mic is now you can speak. Yeah, what? ma'am, I Ji. don't, I don't want planet to Karni Mata then. I don't see you because you are very good man. I don't want Nani And what about you? You are so sweet. and Nani Rawan. Rewiring. Yeah, Nani Rawan. Ma'am, if I ask her at night what does she want to listen, rewiring or Hanuman Chalisa, she says I want to listen ma'am's rewiring. Oh God. Very good. Thank you so much, Sahana. You are such a darling. I cannot. Thank you so much. Look at that. Look at that. Blessings are showering right in the morning from a child who's totally a divine soul. So cute, so beautiful. You are amazing. You're so blessed, Deepak and Purnima. Love you. Yes, let's go with the rest. Nidhi. I think her net. Yes. Nitu.
राधे राधे मैम, जय श्री कृष्णा। राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक बहुत यू, सारा आपको प्यार, बहुत सारा प्यार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैम मुझे कुछ शेयर करना था। प्लीज। एवरीडे मिरेकल है मेरे लिए, एवरीडे। यस। कल मेरी छोटी बेटी है ना, उसका रिजल्ट था। तो आपसे जब मैंने सेशन में बात करी, उसके बाद मैं रेडी होकर के स्कूल जा रही थी। और बहुत अच्छा, मैं घर से रात में ही पहले मैंने डायरी में लिख लिया था कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा और सब मैम उसकी बड़ी तारीफ करेंगी और उसके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो इस तरह से मैंने लिखा था डायरी में। फिर हम मॉर्निंग में गए, जब स्कूल गए तो वहां मैम ने वास्तव में उसकी इतनी तारीफ करी, इतनी तारीफ करी। क्योंकि जब उसके अप्रैल में एग्जाम हुए थे ना मैम, झूठ नहीं बोलूंगी, उसके मार्क्स बहुत कम थे। उस समय भी उसने मेहनत करी थी, सब कुछ अच्छा था। उसके मतलब नए स्कूल में हमने उसको डाला था, तो वो एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। मतलब हमेशा रोती थी, मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे मैम अच्छी नहीं लगती है, मैम डांटती हैं। तो मैं डेली अफर्मेशन करती थी, डेली यही बोलती थी कि मेरी बेटी को स्कूल बहुत अच्छा लग रहा है, मैम उसे बड़े प्यार कर रही हैं। और लिटरली उसको कोई मैम डांटती नहीं है, उसको बहुत प्यार करती हैं, अच्छे से टैकल करती हैं। और जब मैंने उसकी कॉपी देखी ना मैम, उसके इंग्लिश वन में, इनमें सब में इतने अच्छे मार्क्स, 80 आउट ऑफ मतलब केवल 1 पॉइंट, ओनली 0.4 मार्क कटा उसका, और वो भी इस सिली मिस्टेक से। कंप्यूटर वगैरह सब में फुल मार्क्स थे उसके। और मैम ने उसको बोला कि मतलब उसने इतना इम्प्रूव किया है बच्ची ने, और हम बहुत खुश हैं आपकी बेटी से, कि उसको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वाओ। कि वो अपने आप में मस्त रहती है और हर एक्टिविटी में पार्ट लेती है। और उसकी बड़ी तारीफ करी मैम ने, बहुत तारीफ मजा करी। आ गया। बहुत मजा आया उसकी कॉपीज देख के। उसने मतलब मैम यूं कह रही थी कि क्लास में इवन हम नहीं होते, इन्विजिलेटर कोई और होता है, क्योंकि और बच्चा खुद से क्वेश्चन पढ़ करके उसका आंसर देता है। वो फर्स्ट में पढ़ती है मैम। मतलब मैं इतनी खुश हूँ कि इंग्लिश के बड़े बड़े क्वेश्चंस वो खुद पढ़ के आंसर दे रही है। और क्वेश्चंस भी कम से कम इतने क्वेश्चंस थे, और उसने इजीली सबका आंसर दिया। वाओ, एक्सीलेंट। More power to you and to her. I'm so glad. ये सब ये सब आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से हुआ है, और जितने भी मेंबर्स हैं ना, सबकी पॉजिटिव वाइब्स की वजह से हुआ है। Yes, because it's the energy. But या आपने जो काम किया है ना ग्रैटिट्यूड पे, ये अल्टीमेटली उससे हुआ है। जी। तो सब रहे हैं, बट जो रिजल्ट सबके डिफरेंट डिफरेंट हैं, लेवल ऑफ अचीविंग इज डिफरेंट, इज बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो अब जी जितना आप क्लोज टू योर हार्ट होके और क्लोज टू ग्रैटिट्यूड हो गए और जितना आप फील करते हो, उतना ज्यादा आप अट्रैक्ट कर रहे हो। सो क्रेडिट गोज टू यू, बैक टू यू। ओके। हर दिन मेरे लिए मैम एक मिरेकल है। हमेशा होता है मेरे लिए। यस। मैं एक छोटा सा शेयरिंग और करना चाह रही हूँ मैम। नाइट में मैंने अभी दिवाली के लिए कोई ड्रेस नहीं बनवाई थी, कुछ नहीं करा था। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम क्या पहनोगे, क्या करोगे, तुम्हें पता ही नहीं है। पर मैं बहुत खुश रहती हूँ, मुझे पता है मेरा काम हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। मुझे कुछ एफर्ट ज्यादा लगाना नहीं है। कल मैं गई टेलर के पास और मैं घर से बोल के गई थी, मेरा काम हो गया। मैं अपनी डॉटर बड़ी वाली को लेके गई थी, साड़ी लेके गई थी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया मुझे लहंगा सिलवाना है इसका, और मैंने कहा भाई दिवाली के दिन मुझे पहनना है। आप विश्वास नहीं करोगे मैम, उसने बोला मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं कर सकता, लेकिन उसने मेरे को ये बोला, मैं आपको मना भी नहीं कर सकता। और वाओ। हाँ, उसने बोला कि मैं दिवाली में मॉर्निंग में आपको ये बना कर दूंगा, और ऐसा दूंगा कि हर व्यक्ति की निगाह पे टिकी रहेगी। More power to him and more power to you. Thank you for sharing. थैंक यू मैम, थैंक यू। God bless. Yes. Yes, Deepak. थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. Thank you. God bless you. तो मैम, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, सबसे पहले तो आई एम चैलेंजिंग एवरीवन हियर। अब मैं अबेंडेंस का वो जो मिराकल का लिस्ट है वो मैं पर्सनली लिखने वाला हूँ, एंड आई विल बीट ऑल द रिकॉर्ड्स। डिम्पी Wow. मैम के रिकॉर्ड्स भी तोड़ दूंगा, सबके रिकॉर्ड्स तोड़ दूंगा। तो Wonderful. More whoever power are to you. the challengers can Uh, challenge me, but I am going to write so many miracles and create so many miracles. मैम, मैं अभी खुद को जब स्क्रीन पे देख रहा हूँ ना, तो मेरे को लग रहा है कि मैं कितना हैंडसम हूँ। wow. मुझे लग रहा है कि Power. कितना
मतलब कितना ग्लोइंग फेस है मेरा, कितना Yes. पॉजिटिव वाइब है, कितना और है। मतलब पता नहीं मैम, ये जो मैं सही बता रहा हूँ आपका, वो जो 1000 का जो टारगेट है ना मैम, आई डोंट थिंक कि इट इज़ वेरी फार। मतलब अभी ऐसा हो सकता है कि ये 1 आवर का सेशन आपको 2 आवर्स या 3 आवर्स करना पड़ जाए, क्योंकि इतने लोगों को शेयरिंग करना है, इतने लोगों को अपने मैजिक बताना है। और Yes. जब कोई जेन्युइनली फील करता है कि यार दिस थिंग इज़ वर्किंग फॉर मी, तो वो 4 लोगों को और बोलता है कि यार यू कम। जैसे कल एक हम मेरी नेबर है, मैं पता नहीं हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मैं उसको देखता हूँ, मैं उसके भले के लिए कुछ उसको एडवाइस देता रहता हूँ। आई डोंट नो, कुछ आता है मेरे अंदर से। तो कल मैंने उसको इस क्या बोलते हैं सेशन के बारे में बताया कि ये इस तरह का है वगैरह वगैरह। तो वो बोली यार मेरे पास टाइम वगैरह रहता नहीं है इस टाइम पे। मैं बोला ठीक है, यूट्यूब पे रहती है रिकॉर्डिंग, यू कैन इवन सी रिकॉर्डिंग। तो मैंने उसको भी कल ये सुबह शेयर किया। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे मैं शेयर कर रहा हूँ, सारे कम्युनिटी मेंबर्स आई एम वेरी वेरी श्योर कि वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ये सेशन दे रहे होंगे। सो दैट 1000 टारगेट, मेरे को लग रहा है आप जूम का बिजनेस प्लान ले लो क्योंकि तभी क्योंकि होना है ना। हाँ तभी होना है। क्योंकि Yes. और आपको अपने क्लोन्स, मेरे को लग रहा है एआई अवतार्स आपको रखने पड़ेंगे रोमी मैम के, जो अलग अलग मीटिंग्स को अटेंड करके सबको गाइड करे क्यों? You work on them. या मैम Let's we मैंने work together for it. मैंने तो काम कर रखा है इसके ऊपर। मतलब आई हैव वर्कड ऑन कन्वर्जेशनल एआई। तो मीटिंग बॉट बनाना, जैसे जूम की मीटिंग हो रही है, तो इवन इफ यू आर नॉट देयर, इट कैन स्टार्ट मीटिंग ऑन योर बिहाफ, इट कैन ज्वाइन एज अ गेस्ट ऑल्सो, इट कैन रिकॉर्ड द मीटिंग ऑल्सो। वो सारी चीज़ों पे काम कर रखा है। और अभी मैं थोड़ा वो एआई अवतार सीखने वाला हूँ, तो प्रोबेबली आई कैन प्रोबेबली हेल्प वैसा भी। Definitely. We'll talk over that. यस मैम। और मैं क्या बोल रहा था, तो एक तो ये हुआ, और दूसरा ये हुआ कि ये कल वाला जो सेशन था रात का है ना, तो मैं सोते समय लगा के सोया था। तो वो इतना सही था मैम कि व्हेन यू फील लोनली, स्टार्ट गिविंग, मतलब Yeah. गिव अनकंडीशनली। Yeah. सच में मैम कि वो जो आपने लाइन बोली ना, गिवर्स अट्रैक्ट गिवर्स। Yeah. मतलब जब आप रिसीविंग के मोड में होते हो कि यार मुझे चाहिए चाहिए, तो आपको सब मांगते ही मिलेंगे और जब आप देने जाओगे तो सब आपको I देने always वाले होंगे। like, मैंने आज तक ऐसे नहीं किया कभी भी, ऐसे हाँ हाँ, बेस्ट है मैम। मतलब अब तो मैं, जैसे आपने कभी देखा भी हो, तो मैं अब किसी को अगर, जैसे मेरे पास डीएम भी आता है अपने ग्रुप से किसी का फॉर ये, तो मैं सबको मैजिकल डस्ट बोलता हूँ कि मेरी तरफ से मैजिकल डस्ट तुम्हारे लिए, ये काम हो जाए वो काम हो जाए। मतलब दो और वो अपने आप हो गए। और पता है, अभी जब मानसी जी शेयरिंग कर रही थी, उसी समय मेरे पास वो कॉल आया, वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाला, यहाँ पे जो लोकल जिससे मैंने बात की थी, वो बोला सॉरी मैं कल आपसे बात नहीं कर पाया, और अभी कनेक्ट करते क्या। मैं बोला देख अभी तो मैं बिजी हूँ, अभी मैं कॉल पे हूँ, तेरे से बाद में कनेक्ट करता हूँ। ठीक है मतलब वो, क्योंकि जैसे ये सेशन चालू हुआ और आपने वो बुक पढ़ना मतलब ये वाला चैप्टर अपना चालू किया ना, मैजिकल चेक, तो मैं, मेरी फ़ोन बैटरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने आई थी। तो मैं फटाफट से भाग के वहाँ से, घर से ऑफिस आया हूँ। अभी मैं ऑफिस से कॉल कर रहा हूँ, और मेरी वाइफ ने मेरा सारी चीज़ें पैकिंग करके रखी ऑलरेडी, कि मैं यहाँ पे आके अच्छे से जर्नल लिखूँ। क्योंकि क्या होता है मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं घर पे रहता हूँ बच्चों के साथ, तो मेरे को जर्नल लिखने का या वो उतना प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिल पाता है। क्योंकि वो बच्चों को पापा ही चाहिए होते हैं, और वो बहुत मस्तियाँ कर रहा हूँ मैं भी। आई ऑल्सो बिकम अ किड विद देम। तो wonderful. मेरी वाइफ इसीलिए परेशान रहती है कि मैं अगर घर पे हूँ तो किड्स बहुत बिगड़ जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत मस्तियाँ कराता हूँ मतलब मतलब मैं घर पे होता हूँ तो मैं, आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट टीवी। मैं टीवी भी नहीं देखने देता बच्चों को। मैं उनको कुछ ना कुछ मस्तियाँ करता रहूंगा, घुमाता रहूंगा बाइक पे लेके। तो उस वजह से मेरी वाइफ बोलती तुम घर से निकलो तुम घर पे नहीं रहोगे। तो Yes. और मैम ये वाला जो चैप्टर आपने पढ़ा है, अब क्या हुआ कि मेरा, मैं छत पे बैठा था व्हेन आई वाज शेयरिंग एंड हैविंग। तो बीच बीच में नेटवर्क ब्रेक हो रहा था, मोबाइल की बैटरी लो थी। मैं बोला कि फटाफट ऑफिस भागता हूँ, और ऑफिस भागने के बाद वापस से सुनूंगा इस सेशन को। और Wonderful. ये देखिए, मेरे पास पूरी ये अबेंडेंस की चेकबुक मेरी वाइफ ने ला के दी है। तो अब तो मैं Oh, तो दनादन चेक काटता जाऊंगा oh, एक के बाद एक, beautiful. और खूब सारे पैसे कमाऊंगा Wonderful, wonderful. This looks so nice to see. यस मैम। मैम सच Actually. में सही बता रहा हूँ कि यही होता है कि जैसे है ना कि अगर अपन अगर अपन फील करने के मोड में आ जाते हैं,
Yes. इफ वी बिलीव दैट इट इज ट्रू, तो फिर तो मिराकल की झड़ी लग जाती है। Yes. पता है, मतलब वो जैसे अभी सुकेशी मैम ने बताया कि उनका इतना लॉन्ग पेंडिंग चीज, अब साउथ बॉम्बे में प्रॉपर्टी होना, हाँ, वो करोड़ों के अंदर प्रॉपर्टी होगी। और अब बोलो कि ये जो आप साल का कितना लेते हो, 13,000 या ये करोड़ों की प्रॉपर्टी एक 1 ईयर के कोर्स से मैनिफेस्ट हो गई, तो मैम सोचो कि आपके I कोर्स की feel वैल्यू you. कितनी हुई। Yeah. तो इफ एनीबडी हु इज न्यू हियर एंड डाउटिंग कि भैया इस सेशन से क्या नहीं हो सकता है, सो आई एम सेइंग कि अगर आप 1 ईयर का कोर्स नहीं ले रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ मैंने नहीं देखा, सॉरी टू से बट आई एम बीइंग ब्लंट, आपसे बड़ा बेवकूफ़ मैंने नहीं देखा। जो मैम यहाँ सिखा रही है एवरी डे, जो प्रैक्टिस करा रही है, इफ़ यू डू, तो एक एक साल क्या छोड़ो, मेरा खुद का तो 2 महीने के अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन और टर्न अराउंड है, तो आप लोगों का सोच लो कितना होगा। सो Yeah. प्लीज डोंट मिस इट, एंड थैंक यू सो मच मैम। God bless you. I love you. And it's truly a privilege and honor to work with people like you who have that kind of mindset. So ultimately, this is what when you give out, you start receiving. This is the true, kind of precious, value God gives you when you're honest in doing your work. Thank you for being there in my life and being my backbone. Without you guys, I wouldn't have done what I'm doing. And that's the blessing that we are together. Thank you so much. God bless you and I love you. So, Abhishek, can you please share the course details? Yes. My number is 9312246095. If you're looking for something in particular, what Deepak is saying, his life has transformed in 2 months and they decided to come in 1 year. 1 year is giving you a mastery in 4 areas: health, relationship, career, and money. So this happens for 3 months. We meet once a week. That's on Sunday, either 11 in the morning or 7 p.m. in the evening. And the best part is the bonus is whatever I've done in the last 1 year, that all is available to you. Because I want to give you more to have more transformation. So whatever is there is only for your benefit. And then he's right, you're missing. And you're missing out, that's for sure. But then it's your karma. If you want to struggle more, if you don't want to catch hold of my hand, and if you don't allow me to catch hold of you, if you join, it's my responsibility for you to succeed. I have to take the ownership. जरा दीपक किसको है ना साल भर में भी कन्वर्ट करो, साल भर का है क्या इनका? Sorry, I think Neetu is saying something. Yes, convert karo to like this, the value I'm giving you in 13,991 for 1 year, the value is worth 50,000 rupees. Because each course I'm giving you for health, relationship, career, and money, agar hum minimum value 10,000 bhi lagayein uski, and the gratitude mastery and the rewiring sessions, I give you 52 weeks extra in 1 year, wherein I make you to master at each step. अगर मैं नहीं भी आती हूँ, मेरी recordings काम करती हैं, everyone? So it's not me, I'm doing anything. It's the lessons coming from universe, which we when follow, we are dead sure we'll have the results. So with that, we come to an end. Thank you everyone for all the cooperation, for all the results. But more than that, let me feel grateful for all that you're doing to me. You are my backbone. If my dream was to reach you and your generations so that we can create a legacy, if you were not coming in my life, that wasn't possible. So, as much as gratitude I can pay you for getting up, rising above the level where you are, and to evolve to the level where only and only magics are every day. Thank you for sharing every day. Nidhi still has to say something. Nidhi, it's your chance. Thank you so much for all the rewards you're paying. Yes, Nidhi, your network is good bandwidth.
For more details, my number Aman has shared 931224609 You can contact me, and people who are listening the recordings, I'm available to each one. Nidhi, can you open the chat? Her bandwidth is low. All right. I'll have to end because my breakfast is ready. Sorry, Priyanka. You can record it and share in the group from wherever you're coming. I will share it with everyone. Love you all. God bless you. Thank you for joining every day. Let me see you today, Friday in the evening, 7:30, to create more miracles to rewire your brain. Thank you, thank you, thank you. God bless you all. I love you all. Have a